चतुश्शतम् चतुश्शतं सूत्रपर्यन्तम् स्व्री धातु कृतम् अस्माभिः पूर्वकक्षायां स्व्री शब्दे आम् स्वरः इति शब्दः स्व्री धातोः आगच्छति द वर्ड स्वर when we say swara laya tal swara that comes from sri dhatu. अग्रे श्रीगतौ इति धातुः श्रीगतौ which means to go, move, run, flow. श्री युक्त तिक शब कृष्ण धातु के uh, hmm. So when Sri Dhatu is used in the sense of speed, going fast, then Sri becomes Dhava. Sartir Dhavaha, 419. So it becomes Dhavati, Dhavatah Dhavanti. And when Sri is just used like normal Gati, not speed, then we get Sarati. Sarati. So Dhavati, Sarati. Ramasya Ri Shaya Kamapala na cha Trivikramaha. Rama changes to Re when Sha, Yak, or the Ya of a Kamapala Pratyaya follows. And the Trivikrama, which would usually take place by Sutra 390, does not take place. So Sri Yuktate, Ya Krishna Dhatu ke Bhavakarmano, and by this Sutra, Ri Ramasya Ri Sha Yak Kamapala Yeshu na cha Trivikrama. So we get Sriyate. 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 Then, sir, yes, bro. Bro, if Sri is not used as a speed, then what can be the other meaning? Normal, like flowing or normal going. Like, let's say the river is flowing. So, uh, Nadi, that would be Pravahati. Like, actually, the word Sansara also comes from the word, from the Dhatu Sri Gatav. Sansara also. So that would be like normal moving Gati, normal, like normal moving. So means depending on the form, we have to Yes, yes. refer the meaning. Yeah. When we say moving, it does not mean like walking or something like from point A to point B. It could mean some movement, some momentum. For example, the let's say the water of a river is flowing. So that's also a movement, right? Hmm. Let's say the wind is flowing, that's also a movement. Let's say this world, this material existence, this samsara is continuing, the cycle, day, night. So that's also like a movement. So all such movements. Sri Gatav. So Sriyate. Then Sarti Shastyartibhyo Moh Bhuteshe Kartari. In Kartari Prayoga, Nga is applied after the Dhatu Sri, Shasu, and Ri when a Bhutesha Pratyaya follows. So Ridvayant Drishya or Govinda में Drishya and Dhatus ending in Ridvaya take Govinda when Nga follows. Okay. So by this Sri plus Dip Dhatu Purvamat, and by 427 Sutra we insert Nga by this Sutra. Sarti Shastyartibhyo Bhutesha Kartari when there is a Bhutesha Pratyay in Kartari Prayoga. So now generally because Nga has Nga Rama as indicatory letter and Nga is Kitcha Nitcha Kansari.
So Ishasya na Govinda Vishnindra Kansarishu is applied normally. So we don't do Govinda. But by this current rule, Ridvayanta Drishyor Govindo Nge. We do Govinda for Drishi Dhatu and those dhatus ending in Ridvaya when Nga follows. So by this exceptional sutra, we do Govinda here and we get Asarat. Asarat. Then Sri plus Yat, Kamapala. Again, that previous 426. Re Ramasya Ri Shaya Kamapala Yeshu. What was it? Nachatri Vikrama. So, so Re Ramasya Rihi Shayak Kamapala Yeshu. So Kampal Ya is there. So Sriyat. Then Sarta, Sarishyati. We insert it by 425. That was Re Ram Hanibhyamit. Sri Swarateshcha. Re Ram Hanibhyamit Sri Swarateshcha. By this sutra, we insert it. Because otherwise it is Anit Dhatu, but by this sutra, we insert it when we have a pratyaya beginning with say following. Sri. So we get, Sarishyati. Sarishyati. Then the next is Rigatau Prapanecha, Re plus Tip Shap, Artir Richah. In that sutra, Paha Piva, Groji Growth, Modama, Sthanitishta. Then we also had Artir Richa. Re becomes Richa when Shiva Pratyaya is there. So this is the Re Dhatu, becomes Richa. Advaya Aramahara E Ayora Vishnu Vadante, we delete and we get Richati. Richati. Yeah, then Re plus Te Yak. We apply the Sutra 422. Arti Satsangadi Ridantayor Govindo Yakkamapal Yayor Yangi Cha. So we do Govinda and we get Ariyate. Yes, Prabhuji? प्रभुजी अहं ज्ञातुमिच्छामि Mm-hmm. तर्हि एतद् धातु भगवद्गीते अपि प्रयोगं Rigato, रीगतौ धातु अपि प्रयोगं किम् Danim tu Smartum na Shaknomi. Uh, Smartum na Shaknomi, Dan. आं प्रभुजी Re plus Dip, Bhuteshwara, Dhatu, okay, Shab, Re becomes Richa, and then Sarveshwar Adir Vishnindro Prasanga Matre, right? Sarveshwar Ade Vishnindro At Prasanga Matre. We do Vishnindra here, becomes R, then Dhatu Puramat, and ultimately we get Archat. Archat. Then Re plus Dip, again the same thing. Sarveshwar Adir Vishnindro At Prasanga Matre, Dhatu Puramat. We insert Nga, because this is Bhutesha Kartari. We insert Nga by which sutra? 427 is Ngo Bhutesha Kartari. Sati Shastya, Sarti सर्तिभ्यो Shast. को भूतेश कर्तरि No, no, from the beginning. सर्ति शास्त्य अर्थिभ्यो Astyarthibhyo. को Okay, भूतेशे कर्तरि Kartari. Sarti Shastyarthibhyo Ngo Bhutesha Kartari. So we get Arat. Arat. Then Re plus Nal. Uh, so we do Vrishnendra. Antasya Vrishnendro Nrsinghe. And then Sthanivat Durachanam. Re. Then Narari Ramasya Aramaha, Naradira Ramasya Trivikramaha, and we get Ara. Just Ara. It's like, yeah, Ara. Ara. Then Re plus Atus, same thing here, we get Aratuhu, same like Ara, Aruhu, Aritha,
atyarti vrebhyo nityam. So by this we insert it when adhokshara pratyas are there. Atyarti vrebhyo nityam. So this arthi is mentioned here, so we insert it. Arith. So that was re gatau dhatu. Hmm. Prabhuji, Arti is a karmani of re. No, Bhuteshu no. karmani. Arthi is normally made by like patati, like Achyuta 1 1. Tipta Santi. Tipta. This arthi is normally made just to, show that it is re dhatu. This is irregular form. Ideally, we get richati, right? Yes. Yeah, yeah. But this is just irregularly formed just to show that this is re dhatu. That's all. Okay. Hmm. Then the next is shru shravane dhatu. Very interesting dhatu. Shrinoti, to hear. Shravana, Shruti, Shrotram, Chakshus. So all those words come from Shru Dhatu. Shushrushayam. So Shruvaha, Shapaha Shnos Tasya Shrishcha. Now Shap is replaced by Shnu when it comes after Shru, and Shru becomes Shri. So basically we replace Shru with Shri and Shap with Shnu for this Dhatu. Okay, then Ushnvor Govindaha, the Vikaranas U and Shnu take Govinda. So see, Shru plus Tip. Then we insert Shap Krishna Dhatu, and then we apply this 429, the previous one. Shruvaha Shapaha Shnush Tasya Shrishcha. Shru becomes Shri, Shap becomes Shnu. Okay. Now, uh, Ushnvor Govindaha. The Vikaranas U and Shnu take Govinda. Because see, there is no Dhatu. Yeah, there is no Sutra. There is no Sutra by which we can do Govinda here. We have sutras, Dhaturantasya Govinda Pratyay, like that, where we can do Govinda for the Dhatus, but we don't have sutras where we can do Govinda for, Pratyayas or Vikaranas, like this. So that's why the sutra is made Ushnvor Govindaha. The Vikaranas U and Shnu take Govinda. This U will come ahead. Now we are considering Shnu. So Shnu, Govinda is done. Why Govinda is done? First of all, by 430. And also we have a Prithu Pratyay following. If Aprithu, it is a Krishna Dhatuka Pratyay and it is Shiva Pratyay. Sorry, Prithu. So that's why it's happening. If it was Aprithu Krishna Dhatuka, then Nirguna. Aprithu Krishna Dhatuka Nirguna, then Govinda is not done. So here we have Krishna Dhatuka plus Prithu, and then Shnu can take Govinda by this sutra. So thus we are doing Govinda here. So we get Shri Noti, and then Rasha Ridyabhinasana, then Nattu Vidhi, and we get Shrinoti. Shrinoti. Astu. Then Shru plus Tas, Shab, again the same changes. Shruva, Shapa, Shnu, Tasya, Shrishcha. We simply combine it. We don't do Govinda here for Shnu because Tas is Nirguna. Aprithu Krishna Dhatuka Nirguna. So thus we don't do Govinda here. And we get Shinutaha. Rasha Ridibhyo Nasana. Shinutaha. Shinoti, Shinutaha. Then Shru plus Anti. Again the same changes. U becomes Va of Shnu by Udvam Vaha. Right? Udvam Vaha, and we get Shinvanti. Shinvanti Gayanti Sadhava. Sadhavaha. So Shinvanti. Same Shinoshi, Shinodaha, Shinotha, Shinomi till 3.1. Okay, I think this is a big one. One, two, three, four more sutras to complete this dhatu. If you want, I can complete only more. Prabhuji. Then, karotes tu nityam yecha.
No, 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 no. असंयोग पूर्वस्य प्रत्ययो रामस्य हरो वा निर्गुण वमो. The urama of a pratyaya is optionally deleted when the va or ma of a nirguna pratyaya follows, provided the urama is not preceded by a satsanga. So if we have a pratyaya which has urama, then we delete the urama of that pratyaya. If we have a pratyaya following ahead, which begins with va or ma, and which is also a nirguna pratyaya, provided the urama is not preceded by a satsanga. Karotestu nityam ye cha. But the u of a, okay, that's an optional deletion, by the way. But the u of a pratyay which comes after dhatu dunkri is always deleted when the vama of a nirguna pratyay follows and when ya follows. So this we'll see ahead, this karotestu nityam ye cha. So now, shru plus was shab krishna dhatu ke, shruvah shapashnustasya shrishcha. So we get shri plus shnu plus was. Now there are two options by 429, 431. असंयोग पूर्वस्य असंयोग पूर्वस्य प्रत्ययो रामस्य हरो वा निर्गुण व मोह. Shnu has urama, and this u is not preceded by a satsanga. There is no satsanga before u. And after u, we have a nirguna pratyaya vas. Vas is a nirguna, aprithu krishna dhatu nirguna, which begins with va. Thus, we will optionally delete u. So once we delete, once we don't. So shrinvaha and shinuvaha, two forms. Similarly for mas, shrinmaha and shinumaha. Okay. So this is the table. Achyuta, Shanoti, Shanata, Shanvanti, Shanoshi, Shanatha, Shanatha, Shanomi, Shanvaha, Shanavaha, Shanmaha, Shanumaha. Just go through the sutra again, it will be clear. Nothing much here. Then, Shru plus Te. So, Shru plus Te, Yakrishna dhatu ke bhava karmano. And we had that sutra, Vamanasya Trivikrama Krit Krishna dhatu ke tara ya pratyaya, if you remember. Vamanasya Trivikrama Krit Krishna dhatu ke tara ya pratyaya. 390 it says. Vamana becomes Trivikrama when we have ya pratyaya following. So we get Shruyate. Then Shru plus Yat Vidhi. So we get Shrinuyat. Same thing. Shubha Shabha Shnustasya Shishta. Then Shru plus Tu. We get Shrinotu. Shrinotu. Maya Saktamana Partha Yogam Yunjan Madashraya Asangshayam Samagramam Yatha Gyasyasi and 7.1 Bhagavad Gita. Tat Shrinu. Tat Shrinu. So that Shrinu is actually Shrinu, this dhatu. Lot Lakar, which is the Vidhata, 2.1. He. Tuptamantu he. So that is coming ahead. Shrinu. Uramat Pratyayada Sayoga Purvat Her Haraha. He is deleted when it comes after the urama of a pratyaya, provided the u is not preceded by a satsanga. So shru plus he, shap, shruva shapashnustasya shrishta, and by this sutra, we delete he. Uramat pratyayad sanyoga purvat heraraha. So we have u, and there's no satsanga before u, so we delete the he. Uramat 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 pratyayad sanyoga purvat heraraha. So we get Shrinu and then Anatva Vidhi Shrinu. So this is how we get Shrinu. Yes, Prabhu. Prabhu, is there any dhatu which has u but is preceded by a satsang, which like is commonly used maybe if it rings any bells? Not much used. I can think of many dhatus ending with u and he is deleted. Like Kuru. Kri dhatu becomes Kuru. Tat Kuru Madarpanam, Kuru. But something like the yeah, that's not coming to the mind.
Means not much. Yeah, I mean rare things. Rare. So we have U, so we delete he. Uramat pratyayad sanyogapurvat herara. Shrinu. Then you can do the whole thing here. So we get the table of Vidhata. Then Shru plus Dip, Bhuteshwara, we get Ashrinot. You can do this also. Ashrinot. Then Bhutesha, Shru plus Dip, Dhatu Purvat, Sir Bhuteshe. This is an Anit Dhatu. So Ishantasya Vrishnindra Sauparapade. We apply that. Ishantasya Vrishnindra Sauparapade. And Asti Siddhyami Dipsibo. So we get Ashraushit. Ashraushit. Shatovidhi. Ashraushtam इत्यादि. Shru plus Nal. Antasya Vrashnindro Nrsimhe, then Sthanivat Durvachanam, reduplication, uh, then Naradira Ramasya, no, Naravishnu Jananavadishishyate, we get Shushrava, Shushrava, then Shushru Vatuhu, here Uv is done, U becomes Uv, by Dhatos Chatussanasya Vo Sarveshware, that one, Dhatos Chatussanasya Vo Sarveshware, and so Shushru Vatuhu. Because Atus is Kapila or Kansari, so we can't do Govinda here, right? Asayoga Dalita Dhokshija Kapila, so Dhatu Shartu Sanasya Vo Sarveshwara is applied. Yes, Prabhu? Prabhuji, Katham Shushrav, Shrav, how the A matra came? Antasya Vrishnindro and Nrisinghe Udve se Au, then Au Av, Antasya Vrishnindra Nrsimhe. Okay, and this. Okay. Prabhuji, astu. so like that, you get the whole Adhokshila table. Then Kampalayat, Vamanasya Trivikrama Krit Krishna Dhatu Ketaraya Pratyay, so we do Trivikrama here, Shruyat. Shru plus Ta, Govinda is done, Shrota, Shroshyati, Ashroshyat, and that's all. So that was the Shru Dhatu. Okay, here Amrita gives example, Prapnuhi. So here U is preceded by a Satsanga, Pa and Na. Prapnuhi. Prapnuhi. Stuhi. Here also. Shtu Dhatu. Stutau. You should glorify. Stuhi, yeah, you can say. You should. Yeah. You may, you should. Okay, so that is all for the grammar. So which verse? Chapter 1, 51. 51? No, we did. No. 52. 51 completed. As- अस्तु द्विपञ्चाशत् संख्यकं श्लोकम् इदानीं पठामः एवं विमृश्यतं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वै शौरिर्बहुमान पुरः सरम् तो एवं विमृश्यतं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वै शौरिर्बहुमान पुरः सरम्. So the Anvaya goes like this. Shaurihi stands for Vasudev. Evam Vimrishya.
So basically, he was thinking in within himself, all these verses which we read before. So having considered all these, Shauri Vasudev, or you can also say Shaurihi Yavad Atma Nidarshanam Evam Vimrishya. So Vasudev, as far as his understanding, within himself, Yavat Atmani Darshanam. So he thought as far as he could, basically. Then what did he do? He, Shaurihi, Bahu Man Purahsaram Tam Papam Pujayamasa Vai. So he basically kind of worshipped, or you can say he respected, glorified, uh, praised. Prabhupada says, uh, whom did he praise? He praised Tam Kansam, the Kansa, who is Papam, who is sinful. Shukdev Goswami even didn't say like Papinam, or like one who does Pap is Papi. One who has got Dhan is Dhani. Similarly, one who does Pap is Papi. So 2.1 of Papi would be Papinam. He directly said Papam. He is sin personified. So he praised, he glorified such sinful Kansa. How? Bahumana Purhasaram. By basically offering all kinds of, or all kinds of man, respect, offering much respect to him uh, by words and so on. Bahumana Purhasaram. It could feel like chaplacy, as we say in India, in Hindi, to get our work done, even unwillingly. So, but Vasudev did it, father of action. So that is the Anvaya. प्रभु जी पुनः पुनः Amam. Shaurihi Yavad Atmani Darshanam Evam Vimrishya Bahumana Pursaram Tam Papam Pujayamasa. Vai. This Bahumana Pursaram sounds like adverb, Kriya Visheshana. Like how did he worship? So he worshipped by offering great respect before him, to him. So that's like, that tells about the quality, some feature about of the Kriya, of the action. So in chapter 4, we will read Kriya Visheshanam Karma or Kriya Visheshanam Brahma. An adverb in Sanskrit always takes Brahmalinga 2.1 form. That's all. Because for the Kriya, because Kriya does, they don't have any gender of themselves, right? In verbs, there is no gender consideration. So, but in nouns, we do have consideration of genders. So in nouns, when we have adjectives, going with the nouns, it's very easy to, give the same gender to the adjective, as it goes with the noun. But when it comes to Kriya verb, so there is no gender for verb. So what gender will we give to the adverb? So that's why they have kept it Brahmalinga only, 2.1. Kriya Visheshanam Karma or Kriya Visheshanam Brahma. Prasanna Vadanam Bhojo Nrishamsam Nirapatrapam Manasa Duyamanena Vihasanidam Abravit. So Prasanna Vadana Ambhojaha Nrishamsam Nirapatrapam Manasa Duyamanena Vihasan Idam Abravit. So Vasudeva Shaurihi, we can take Shauri from the previous verse, who is Prasanna Vadanam Bhojaha, who is basically smiling outwardly. He has a smile on his face now. Prasanna Vadana. His face, Vadana, is Prasanna, is happy.
Ambhojah. So his lotus-like face is smiling. There is a smile on that lotus-like face of प्रभु जी मतलब अम्बोज किमर्थम? कमल lotus. Amboja means lotus or smiling? Ambhoja is lotus. Lotus. Prasanna by Prasanna smiling, I say. Happy, Okay. smiling. I mean, not smiling, but happy. Like, satisfied, happy. Uh, then, but Manasa Duyamanena. Manasa Duyamanena. But within the mind, he was. Duyamanena is. He was distressful. He was in pain. He was feeling that misery. Yeah, full of anxiety, sorrow. But within the mind, he was sorrowful, full of anxiety. But still, he kept his, what do you say in English? He kept his, uh, Demeanor. what is it? Demeanor, facial What, expression. how do you spell it? Demeanor. 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 Is it Demeanour? Yes. Demeanor. Demeanor. Demeanour, right, demeanor. So he maintained his demeanor. Uh, so, but inside he was fully anxious. And then Vihasan, now it comes smiling, Vihasan, while he was smiling. Nrishangsam nirapatrapam idam abravit. He spoke these sentences, idam abravit, to conserve who is Nrishangsam, who is cruel, and who is shameful, nirapatrapam, who has got no shame within himself of relations, of humanity, nothing. So now Vasudev will start speaking again to Kansa. Just प्रभु जी imagine, yes, yes. what was uh, the what we say अनु अनुवाद what we say प्रभु जी जो उसका restructure था Anvaya. अन्वय what was the अन्वय for this प्रभु जी? So Prasanna Badanam Bhojah Duyamanena Manasa Vihasan Nirapatrapam Nishangsam Idam Abravit. प्रशंसन इदम् अब्रवीत्। प्रभु जी अहं ज्ञातुम् इच्छामि दूयमानेन तृतीय एक वचन शानच् प्रत्यय Amam. दूय 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 प्रभु जी कैसे शब्द बना दूय दूय इज द प्रातिपदिक So दुय ये जो य है ये काइंड ऑफ जो हमारा यक है यक कृष्ण धातु के भाव कर्मण तो उस प्रकार से ही ये यक य है हाँ तो ये वही य है क्योंकि अच्युतादय शिवश्च अच्युतादय पंच शिवश्च कृष्ण धातु का राइट हम्म और शानच में श इत है श इत है शानच प्रत्यय में श इत होता है आना रह जाता है हाँ यस प्रभु जी यस यस तो इस हिसाब से शानच कृष्ण धातु का प्रत्यय हो गया क्योंकि वो शिव हो गया शित शिव हाँ यस प्रभु जी तो इसलिए यक कृष्ण धातु के भाव कर्मणों से यक आ जाता है वहां पर बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग आत्मा पद नहीं यक कृष्ण धातु के भाव कर्मणों भाव कर्म मतलब यक आएगा और ये कृष्ण धातु के शानच एंड या वो कर्मणि भाव में आ जाता है इसलिए राइट ये चैप्टर 5 में हम देखेंगे और फिर म ओके एक विशेष सूत्र से म आ जाता है तो दूय मान बन जाता है
दूयमान और फिर तृतीय एकवचन में दूयमानेन। एंड द धातु इज दू, अर्थात एंजाइटी। हाँ, दू मतलब एंजाइटी मिजरी इसका। चलिए हम खोल के देखते हैं इसको। स्लो चल रहा है। प्रभु जी, अहम सर्च्ड सर्च्ड वन दू फोर्थ गण दूयते टू सफर और टू इन्फ्लिक्ट पेन और एंजाइटी। ठीक है, कुछ तो अभी पता नहीं स्लो चल रहा है। तो आप उसमें अष्टाध्यायी में भी देख सकते हैं दू, और फिर उसमें कृदंत में वो शानच वाले रूप भी दिखा देगा। ठीक है, तो दैट वाज 53। एक और करते हैं। परितापे दूंग परितापे। ठीक है, दूं परिताप। परितापे। हाँ, ओके। 54। चतुःपंचाशत्। श्री ओ प्रभु जी, वसुदेव। प्रभु जी, प्रभु जी, अ, अहम अ, अ, कश्चित् प्रश्नम् अस्ति। निरप नृशंसम। ये प्रभु जी कैसे शब्द नरी मीन्स मैन, शम नहीं नहीं, ये कुछ रूढ़िवादी शब्द है ये। नृशंस। रूढ़िवादी। हाँ, रूढ़ि मतलब तीन तीन प्रकार के शब्द होते हैं। यौगिक शब्द, योग रूढ़ि और रूढ़ि। तो यौगिक शब्द वो होते हैं जहाँ पे प्रकृति और प्रत्यय से शब्द बनते हैं। यौगिक प्रकृति और प्रत्यय से शब्द बनते हैं। हम्म और और जो प्रकृति और प्रत्यय का प्रयोग होता है उन्हीं का अर्थ फाइनल वर्ड में रिफ्लेक्ट होता है। हम्म जैसे मान लीजिए दृश्य धातु है, दृश्य धातु का अर्थ हुआ देखना। और उसमें हमने कृदंत का प्रत्यय लगा दिया ल्युट, तो ल्युट का बन जाता है अन। तो अब हम्म और अन का प्रयोग होता है करण में, करण प्रयोग में, इंस्ट्रूमेंटल केस में। तो अब दृश्य और ल्युट लगाने से बन जाता है शब्द करण, सॉरी दर्शन, दर्शन। दर्शन। हम्म तो अब दर्शन का अर्थ हो गया। तो दृश्य और ल्युट से जो उनमें अर्थ था वही अर्थ फाइनल वर्ड में रहा। हम्म इसको बोलते हैं यौगिक। यौगिक या योगिक? औ औ बड़े यू की मात्रा। औ होता है ना, ओ औ। ओ, नॉर्मल ओ, दीर्घ मतलब लघु। ओ और औ औ। आउ, दूसरे दीर्घ आउ, वाला। त्रिविक्रम आउ। हम्म। तो ये यौगिक। तो हो गया, ये हो गया यौगिक। फिर दूसरा दूसरी कैटेगरी होती है आपकी यौगिक होता है। फिर एक होता है आपका योग रूढ़ि। योग रूढ़ि में क्या होता है
इसमें प्रकृति प्रत्यय का अर्थ भी होता है और थोड़ा सा कन्वेंशनल, रूढ़ी मतलब हो गया कन्वेंशनल, जो मतलब बोलचाल में चल रहा है उसी हिसाब से चलाना। ओके। योग रूढ़ी, तो यौगिक में हमने एग्जांपल लिया था दर्शन का, जो बना दृश्य धातु से और अन लुट से। योग रूढ़ी में एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए जलज। तो अब जलज जो शब्द है वो बना दो चीजों से, जल प्लस जा धातु। जा मतलब जन्म लेना। तो जले जायते इति जलज, अर्थात जो जल में पैदा हुआ उसको बोलते हैं जलज। ठीक है। भाई जन तद्धित प्रत्यय। धातु है प्रभु जी वो। ओके, धातु लगा अलग से, ठीक है। हम्म, समास हो गया ना जलज। ओके, ठीक है। तो जल में जो जन्म लिया उसको बोलते हैं जलज। अभी जल में तो बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं, कुछ भी हो सकता है, किंतु शास्त्रों में जलज बोलने से, तो अब इसमें देखिए, शास्त्रों में अब जलज बोलने से 99.9% कमल को लिया जाता है, लोटस को। ओके। आप समझ रहे हैं? अब जलज का योग अर्थ भी उसमें है, क्योंकि लोटस पानी में उगता है, तो यौगिक अर्थ भी है उसमें। हम्म और रूढ़ि अर्थ इसलिए हो गया कि जलज को सिर्फ लोटस से इंपोज कर रहे हैं। हम्म समझ गए ना? योग रूढ़ि हो गया, कन्वेंशनल मीनिंग भी ले लिया कि जलज बोलने से सीधा लोटस दिमाग में आएगा, और साथ में यौगिक अर्थ भी है उसमें, कि हाँ जल में तो उत्पन्न होता ही है। तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं योग रूढ़ि, जिसमें यौगिक प्रकृति प्रत्यय का अर्थ भी रह जाता है और थोड़ा कन्वेंशनल मीनिंग भी आ जाता है। हम्म और फिर तीसरी कैटेगरी होती है रूढ़ि शब्द। रूढ़ि शब्द के एग्जाम्पल आप थोड़ा बहुत देखिएगा, मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है। समथिंग लाइक अच्छा ऐसा कुछ दे लेते हैं, झट झटी थी। ओके लेट्स से दिस, झट झटी थी। अब इसका कोई प्रकृति प्रत्यय नहीं है। ये सिर्फ ये रूढ़ि शब्द है जो कुछ चले आ रहे हैं। झट झटिति का अर्थ होता है कि ओके। ताड़ाताड़ी, ताड़ाताड़ी मतलब जल्दी जल्दी, शीघ्रम। बांग्ला में बोलते हैं ताड़ाताड़ी, नॉर्मल, जल्दी 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 जल्दी, झट झटिति। तो इसका कोई प्रकृति प्रत्यय, कोई यौगिक, हम्म कोई व्याकरण के दृष्टिकोण से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ चले आ रहे हैं ये शब्द, तो हमने इनको प्रयोग किया, रूढ़िवादी अर्थ, रूढ़िवादी शब्द सॉरी। तो ये तीन कैटेगरीज होती हैं, यौगिक, योग रूढ़ि और रूढ़ि। ओके। एंड दिस इज रूढ़ी शब्द। तो अभी हम किसकी चर्चा कर रहे थे? नृशंस हाँ, शब्द। नृशंस प्रायः उसी कैटेगरी में। एक बार देखना पड़ेगा, जहां तक है प्राय वो इसी में ही है, रूढ़ी टाइप ही है वो नृशंस। ओके। एंड प्राय। दिस इज एंड दिस इज फॉर तीन प्रकार के शब्द ना? हम्म एंड प्रोजी पत्रपम, हाउ वाज इट फॉर्म्ड? अपत्रप शब्द होता है, लज्जा को अपत्रप बोलते हैं। अप तो बेसिकली ये ओके। त्रप त्रप धातु होता है। तो त्रप, तो फिर त्रप में अप लग गया और अप से पहले निर लग गया, तो निरपत्रप, ऐसे अप और निर उपसर्ग हो ओके। गए, उपेंद्र, और त्रप धातु हो गया। नी प्लस अप प्लस त्र। त्रप त्रप। ओके। त्रप लगा, त्रप का क्या अर्थ है ये इसमें? लिखे टू हुए बी। हैं, लज्जा, लज्जा होना, टू टू शेम, लज्जा, लज्जा फील होना, लज्जा जिसको बोलते हैं, शर्म। हम्म अब प्रोजी क्लासेस में कौन सा लिखा, गण? फर्स्ट हो गया आपका वादी, पहला ही लिखा हुआ वन। और इसमें प्रोजी वो लिखा नहीं, परपद आत्मपद?
हाँ, इसके रूप नहीं लिखे, देखना होगा। ठीक है। तो निरभद्रपम। ठीक है। हाँ प्रभु जी। ठीक है, तो एतत् पर्यन्तमेव अद्य, यहीं तक आज 20, 21, 22, 23। प्रभु जी, प्रभु जी, फ्यू मोर प्रभु जी, लाइक प्रसन्न वदन अम्भोज इति श्याम सुंदर समास। नहीं, श्याम सुंदर तो होता ही नहीं है, श्याम राम होता है। श्याम राम, थोड़ा समय हो गया। तो प्रसन्न वदनाम हो जाए। तो प्रसन्न, लेट्स चेक वदना कौन सा लिंग है। वदना, न्यूट न्यूट न्यूट, ओके। प्रसन्न वदना अम्भोज, अच्छा। हम्म। तो प्रसन्नम, हाँ, प्रसन्न वदन जो है ये तो हो गए आपके श्याम राम समास। तो प्रसन्नम च वदनम च, या प्रसन्नम चासौ वदनम चेति। श्याम तो राम। ये तो श्याम राम हो गया। अब फिर प्रसन्न वदनम अम्भोजः इव, ये आपका हो गया। ये भी श्याम राम की कैटेगरी में आना चाहिए। प्रसन्न, पहले तो ये यहाँ दो समास चले हैं, पहले तो प्रसन्न और वदन के बीच में, ओके। और फिर प्रसन्न वदन और अम्भोज को फिर दूसरा समास। तो पहले तो किस कीदृशम वदनम, तो प्रसन्नम वदनम। हम्म। तो प्रसन्न वदनम ये हो गया आपका एक समास, हम्म। कि जो वदन है वही प्रसन्न है, हम्म। श्याम राम। और फिर प्रसन्न वो नाउ अगेन, तत् प्रसन्न वदनम कीदृशम। तो तो प्रसन्न वदनम अम्भोज इव। हो जाएगा। ये वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं, उपमा हो गई ना ये। उपमा, उपमा सिमिल। हाँ, उपमा हो गई ये, कि उसकी तरह है इव। तो प्रसन्न वदनम अम्भोज इव। मीन्स प्रभु जी, इसमें दो, एक तो प्रसन्न वदन एंड एक प्रसन्न वदन अम्बोज। आम आम। ओके। टू, टू आर देयर एंड ये ईवा वाला सिमिली प्रभु जी श्याम राम ही कहते हैं या वो कौन सा था? ये आपका अ, श्याम राम कृष्ण पुरुष बहुव्रीहि मुझे बस पीताम्बर। देखना होगा किसमें है एग्जैक्टली। श्याम राम कर्मधार यामी कृष्ण पुरुष त्रिविक्रम। एक बार देखना होगा, जस्ट ये आप भी एक्सप्लोर कर सकते हो ईवो वाला किसमें है। यस प्रभु जी, मैं एक देख रहा हूँ। कृष्ण पुरुष, कृष्ण पुरुष प्रभु जी, लाइक जस्ट मैं एक मिनट देख रहा था नोट्स में। पुरुषो व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र। अच्छा, ये तो किसमें है ये? एक कृष्ण पुरुष। कृष्ण पुरुष समास। यस प्रभु जी। हम्म, उपमेयम व्याघ्रमादिभिर उपमानैः। ठीक है, फिर उसमें ही ले लीजिए।
मान ही मेघ इव। तो इस प्रकार से दो यहाँ पर है, दो समास है। सन इदम अब्रवीत निरपत्रम वनम भुजम्। प्रोजे इस श्लोक में बस मतलब दो ही समास है, इसके अलावा और कोई नहीं ना? विहसन भी नहीं है समास। नहीं नहीं। एंड प्रोजे बहुमान पुर पुरःसरम पिछले श्लोक में हम्म। ये कौन सा समास हो सकता है? सुरम कृष्ण पुरुष, द्वितीय कृष्ण पुरुष। पूरा सरह जो शब्द है वो पुरः बहुमान पुरः सरति, यदि पुरः सर, ये सर एक्चुअली जो सर शब्द है श्री धातु से है, जो आज हमने पढ़ा है बाय द वे। ओके। हाँ, पुरः सरति, सर है ना, गोइंग बिफोर लिखा है यहाँ। तो श्री गतौ, तो पुरः सर, तो पुरः सरति इति पुरः सर, पुरः सरति यह च यह सा, बहुव्रीहि टाइप साउंड, पीताम्बर साउंड कर रहे हैं। पुरः सरति यह सह, अन्य पद प्रधान प्रभु जी, साउंड। किंतु बहुमान पुरुषरम एक समास न भवन्ति। तो पुरः सरम तो बहुव्रीहि है ही पीताम्बर। अब बचा बहुमान। तो बहुमान अपने आप में अगर हम उसको देखेंगे बहुमान को, तो श्याम राम हो जाएगा वो। ओके, श्याम राम। हम्म, वो श्याम राम हो जाएगा, क्योंकि बहुमान का विशेषण है ना, मतलब कितना मान, कितना सम्मान, बहु, बहुत सारा सम्मान। तो हम्म। तो मान विशेष्य हो गया और बहु विशेषण हो गया, तो श्याम राम है वो। तो बहुमान श्याम राम है, पूरा सरम पीताम्बर है। अब इन दोनों को हम कैसे करें क्लब? आ, वो क्लब करके कौन सा तीसरा समास कौन सा होगा वो देखना होगा। एनी तो इस तरह से बहुमान पुरस्सरम। एंड प्रभु जी, यावद या आत्मनि दर्शनम। यावत तो अलग है, और आत्मनिदर्शनम, और सॉरी आत्मनि दर्शनम, तो आत्मनि तो सप्तमी एक वचन हो गया। हाँ, ये मतलब अलग अलग ही हैं, नो समास। हाँ, अलग अलग ही है, आत्मनि और दर्शनम अलग अलग। तो प्रभु जी, इन्हें फिर टुगेदर क्यों लिखा जाता है फिर साथ में? ये गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे, क्योंकि आत्मनि अलग है, दर्शनम अलग है, तो अलग ही होना चाहिए। अलग होना चाहिए, ठीक है। आम प्रभु जी, अस्तु। अस्तु, तो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद प्रभु जी। हरे भूरि च कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।